फिल्म का नाम है जैसे कैरी ऑन कुत्तों. What's the meaning of कैरी ऑन कुत्तों? अच्छा, तो पहले आप लोग बोलेंगे. I feel ये जो फिल्म का नाम है, initially it started with how we say carry on. Yeah. Like, yeah. you know, carrying on or why don't you carry on? So that phrase, that was taken, and because all these four characters, their mentality is like a dog, so it became carry on Kutto. No matter And- what. Yeah, exactly, no matter what. And his character name in the film is Kerry, so that's how it became Kerry on Kutto. सो ऐसे ये जितना भी हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि दे आर डिफरेंट एंगल्स. ये मल्टी कैमरा सेटअप है, ये जो आपका टाइटल है. आप इधर से देखेंगे आपको कुछ और दिखेगा, यहाँ से देखेंगे कुछ और दिखेगा, यहाँ से देखेंगे कुछ और दिखेगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बट या एसेंशियली कैरी ऑन कुत्तों इज अ, जैसे कि आराधना ने बताया था, इट्स कमिंग ऑफ एज, it's desi and it's damn cool. It's very cool and it's joyous. Yeah. It's It's fun, these it's kids quirky. are not depressed. They are not Yeah. saying कि oh my god मेरी life में ये नहीं है, oh my god मेरी life में वो नहीं है. We keep cribbing about things, but these people who are maybe 19, 20, who are growing up, इनके लिए लाइफ में एडवेंचर है हर चीज़. हाउ डू आई रीच देयर? सो आई हैव टू फाइट फॉर दैट. लेट्स फाइट फॉर दैट. लाइक हर कैरेक्टर इज फाइटिंग फॉर समथिंग, हिज कैरेक्टर इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग फॉर समथिंग. यानी everybody is going through some all sort the of characters are going through a struggle, an internal struggle. yeah, there's this maybe- identity yeah. crisis. Yeah. They want to come over that whole thing where, listen boss, I'm not just this. You know, जैसे कैरी का एक है कि his father doesn't know whether he is my son or not, so the whole town calls him, he's you know we don't know who his father is. Yeah. Like her struggle is that maybe She's on her own. She's on her own. She can't depend on her her family. parents sent her to a nana nani's place. His identity is where he's trying to prove something to his father. At the same time, he's trying to be what he's not actually in life. And then that's why करण का जो कैरेक्टर मेरे ख्याल से वो ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही सोबर सा सिंपल सा है, बट पोस्ट द इंटरवल ही फ्लिप्स. Yeah. And how I don't think we should say. yeah how he comes face to face with other characters. Yeah. When you look at him, he looks like a very simple, sober guy, but there's a flip, Yeah. and that he's done really well. So, अगर कैरेक्टर की बात करिए तो कितना रिलेट करते हैं आप कैरी के कैरेक्टर से? कैरी के कैरेक्टर से देखिए, there are days जब मुझे लगता था मैं कैरी हूँ, and there were days when I completely used to feel I'm not Kerry at all, because I've been born and brought up in a family where I was raised by my grandmother, my mother, my sisters. I have a cat and a dog. Even the cat and dog are she. Yeah. So I'm surrounded by wonderful women, and this character, he never had a woman's or a female influence in his life. His mother left him when he was really young, and so he had this very bitter memory, whatever memory he has of his mother. And कुछ ऐसे dialogues थे फिल्म में where he is using very bad language for the maybe for some other character, for his mother, and to live up to those kind of dialogues, whatever I'm doing, I need to make you believe that. And for me to believe that, it was really painful to say those lines, but as an actor you have to do those things. And but there were days when it was very difficult, and there were days it was just like a cakewalk. And आप अपने कैरेक्टर से कितना रिलेट करती हैं? मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाई थी अपने कैरेक्टर से, बिकॉज इनिशियली मैंने गॉट द कितना नरेशन. काम करा आपने आपके कैरेक्टर के ऊपर? काफ़ी काम करना पड़ा, काम करने में मज़ा आया, बिकॉज when I heard the script, I took it as a challenge. I love taking up challenges, and when it came to me, because Jyoti is very different from me as a person. She's very materialistic. She uses her charm to manipulate others. Yes. Yeah. So I'm not like that. I work my ass off. I work hard and get my things done. Also, the fact that I just mentioned that no family support, parents threw her out because she was a girl child. I'm celebrated in my family for being a girl. My parents have never differentiated between me and my brother. I come from a family where girls and boys are the same. In fact, girls are respected way more. So that in that category, I didn't really relate to the character. But that was the fun part, because when you don't relate to the character, you meet people, you just observe around, you see things around,
and that's how you develop the character in your head. So similarly, I met a lot of people during that workshop we did in Lucknow. Met schoolgirls, government school going girls from in that age bracket, saw how their body language is, how they talk, what are their ideas, and on the basis of that I formed the character in my head, and just worked like magic. And the rest is history. एंकर आपसे जानना चाहेंगे कि कितना मतलब काम करा आपने इसके ऊपर और कितना रिलेट करता है आपका कैरेक्टर आपसे? यार इस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है और क्योंकि अगेन आई एम नॉट लाइक दैट इन रियल लाइफ एंड टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी एंड इमोशनल लेवल एंड यू नो एंड हाउ दिस कैरेक्टर इज़, वो बहुत अलग था और उसको थोड़ा समझने के थोड़ा इमोशनल है लेकिन इट्स वेरी फन. वी हैड अ ग्रेट टाइम लाइक प्रिपेयरिंग फॉर इट, But shooting for it. let me tell you something. In real life, my father was a teacher and he used to teach maths and physics and chemistry. And I can somehow relate to Suraj's character. Not Kerry's character, but my childhood was very much like Suraj. Small town Suraj, that was me. एंड फिल्म की अगर बात की जाए तो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ फिल्म? फिल्म की यूएसपी क्या है? एक शब्द में कहूँ तो it's desi cool. आप क्या कहना चाहेंगे? I feel the magic of the film is in its dialogues, because the dialogues of this film are very quirky. If you've seen the trailer, you must have noticed that, you know, it's very it's fun. I think after a long time, dialogue bazi in a very it's not a cinematic thing कि you know मैं तेरा खून पी जाऊँगा ये, it's not that. It's a very the way we talk to each other in day to day life. But जो कैरेक्टर हैं वो अपने आप में इतने अतरंगी, इतने निराले हैं, इतने अमेजिंग हैं. The way they talk to each other, everything sounds so funny. Even my tragedy will sound funny to you. So and खासकर क्योंकि जब आप ग्रास रूट की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बात करने का लहजा होता है. हर चीज़ में एक मुहावरा मारा जाता है, हर चीज़ में एक कटाक्ष यानी सरकाज़म होता है. वो हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है. Yes. And heads off to the director, the writer and the producer of the film. कि उन्होंने वो जो फिल्म का एक एसेंस था, जो टेस्ट था, वो मेंटेन करके रखा है. और हिमांशु ने, द राइटर ऑफ द फिल्म, द डायलॉग राइटर ऑफ द फिल्म, ही इज़ डन अ किक-एस जॉब. ही इज़ रिटन सम ब्यूटीफुल लाइन्स एंड एज एन एक्टर आई थिंक आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड लकी टू डिलीवर दोज लाइन्स. एंड लखनऊ की अगर बात करिए तो लखनऊ में काफ़ी अलग तरीके की उनकी लैंग्वेज भी होती है, उनका लिहाजा बात करने का अलग होता है. यहाँ पे आपने शूट कराया. हाँ. सो क्या क्या मतलब थोड़ा कुछ बताएंगे उनकी लैंग्वेज में क्या क्या कर रहा है डायलॉग वायलॉग तो यार वो तो फिर आप पिक्चर देख लेना, उसमें आप जोन में होते तो बोलने में मज़ा आता है. लेकिन एक दिन हम लोग शाम को घूम रहे थे, फिल्म में नहीं है ये, ऐसी एक वाक़या हुआ था. हम सब घूम रहे थे, कहीं से घूम के आ रहे थे, तो आराधना का दूसरा दिन था लखनऊ में. एंड आराधना डिडंट नो कि भाई हम व्हाट काइंड ऑफ हाउ डू वी हैव टू गो आउट एंड क्या पहने क्या ना पहने. तो हम सब वॉक कर रहे हैं सुबह सुबह और यहाँ पे चौक में कुछ यानी कुछ साइड पे कुछ लड़के बैठे थे, तो ऐसे सब लग रहे हैं हाई फाई, बॉम्बे से अभी नए नए आए हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं. तो एक लड़का होता है, अरे मैडम को इधर बुलाइए, उनको चाहिए पिला देते हैं. तो एंड शी लुक बैक एंड शी स्माइल्ड एंड शी वॉकड अवे. लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया उसने क्या बोला. मैंने बोला चाहिए पिला देते हैं, डेट के लिए पूछ रहा है तुमसे. और बाय द वे हमने लखनऊ में शूट ज़रूर की है, लेकिन ये लखनऊ की फिल्म नहीं है, ये बलिया की फिल्म है. क्योंकि जब हम इंटीरियर्स में जाके करते हैं तो हमें वैसी लोकेशन इजीली मिल जाती है. बलिया में प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल टू शूट द फिल्म. लखनऊ, बनारस, हमने काठमांडू में शूट किया है, ओरछा में शूट किया है. सो विजुअली it's a broad film. It's a visual delight. It's a broad film. It's a huge. The canvas is huge. So how was the experience? कैसा experience रहा? I'm telling you, I had a blast. I think this is my you know, as an actor, if you keep on working consistently and if you're lucky, then you get a really kick-ass character after a point of time. But I've been very lucky. I just got it in the beginning of my career. And as an actor, I'm if I talk about myself, I'm really hungry. I really want to do some different shades, different kind of roles, maybe some eccentric, crazy. And this was a character which I always used to imagine कि यार ऐसा कुछ करना है. And when Ashok told me कि this is the guy यार, you know, this is what he is all about. And when I heard it, I was like, damn, ये तो करने में मज़ा आएगा. And I think it was a lot of fun. Yeah. And आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. And I would say the same thing, that to get such a role right at the beginning of your career, it's my first film, and to get a character who's so interesting to play and great, to be honest. She's usually
हीरोइंस का कैरेक्टर बहुत ही स्वीट नाइस इनोसेंट वैसा होता है एंड टू गेट टू प्ले अ ग्रे कैरेक्टर राइट एट द फर्स्ट फिल्म दैट आई डिड was a great thing. I couldn't have asked more. I think nobody सीधा साधा in the film. Yeah. Everybody's चालू and grey. रिटर्न आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका काम करने के साथ? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है और आज के टाइम में अगर आप एक अच्छा कैरेक्टर कर लेते हैं तो आप काफ़ी टाइम तक याद रखे जाते हैं या और जो ये फिल्म है और ये बहुत अच्छी फिल्म है, इसमें कोई टाइम वेस्टेज नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई इट्स नॉट फिल्टर्ड विद लॉट ऑफ थिंग्स एंड एवरीथिंग, इट्स अ स्टोरी एंड स्टोरी टेलिंग। आई मीन हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा विजन था उनका, या इट्स अ ग्रेट स्टोरी टेलिंग। ओके, एंड जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए 1 जुलाई को कैरी ऑन कुत्तन रिलीज हो रही है, तो चाहिए देखिए एंड आई एम प्रॉमिसिंग you guys are going to have a lot of fun, you are going to crack up, you are going to have a gala time. I'm promising you that. And आप कुछ कहना चाहेंगे? I would just say that if you buy a ticket and go to the theatre to watch the film, you will not regret it. You'll come out of the theatre just remembering dialogues and talking to each other in that same tone. I can guarantee. I think this will bring back the dialogue bazi. Yeah. And वो dialogue bazi जब young actors कर रहे हैं जिनको आपने पहले शायद देखा नहीं हो, तो और मजा आएगा फिर। क्योंकि आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी फिल्म है, अगर आप देखने जाएंगे तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड और एक काफ़ी सालों में एक बार ऐसी फिल्म बनती है कैरी ऑन कुत्तन जैसी, एंड इट्स ग्रेट, इट विल बी फन। You know, I think you cannot fake confidence, and we've seen the film. And when you're doing films, you see a lot of films coming and going. I've done already 2 films before this, but in my personal experience, whatever I've seen, I think I'm really proud of this film. I'm proud to be a part of this film. Yes. Thank you. Thank you.